Alaikum and dear students, today we are going to learn our chapter number 15, that name is Gulliver's Travel. I am going to translate it into Urdu, so let's start. Gulliver's Travels, Gulliver के सफ़र, Part 1, हिस्सा अव्वल, A Voyage to Lilliput. लिलिपट की तरफ एक बहरी सफ़र. The author gives an account of himself and his family. मुसन्नफ़ अपने बारे में और अपने ख़ानदान के बारे में बयान करता है. He gives reasons why he had taken up that journey. वो इन वजूहात को बताता है जिनकी वजह से इसे सफ़र करना पड़ा था. He is shipwrecked and swims for his life. इसका बहरी जहाज़ तबाह हो जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए तैरता है. He gets safe on shore in the country of Lilliput. वो लिलीपट मुल्क के साहिल पर हिफाजत से पहुंच जाता है. He is made a prisoner and carried up the country. इसे कैदी बना लिया जाता है और मुल्क के अंदर ले जाया जाता है. Gulliver observes that everything is of miniature stature. गुलिवर मुशाहिदा करता है कि हर चीज़ की जिसामत बहुत छोटी है. The average height of human beings is 6 inches. इंसानों का औसत कद 6 इंच का है. What became of my companions I cannot tell, but I presume they were all lost. मेरे साथियों का क्या बना मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सब खो गए थे. Since I was extremely tired, I went to sleep after reaching the shore. जैसा कि मैं बहुत थका हुआ था, साहिल पर पहुंचने के बाद मैं सो गया. When I woke up, I found my arms and legs were strongly fastened on each side to the ground. जब मैं जागा तो मैंने देखा कि मेरे पाँव और हाथ मेरे पहलू में मजबूती के साथ मेरे दोनों तरफ ज़मीन से बंधे हुए थे. My hair, which was long and thick, was tied down in the same manner. मेरे बाल जो कि लंबे और मोटे थे इसी अंदाज में नीचे बंधे हुए थे. In the meanwhile, I noticed a small human being moving on my leg. इसी दौरान मैंने एक छोटे से इंसान को अपनी टांग पर चलते हुए देखा. I noticed 40 such persons following the first one. मैंने देखा कि वैसे ही मज़ीद 40 और पहले वाले के पीछे थे. In my astonishment, I roared so loud that they all ran back in fright. अपनी शदीद हैरत में मैं इतनी ज़ोर से दौड़ा कि वो सब खौफज़दा होकर वापस दौड़े. Afterward told that some of them were hurt with the falls they got by leaping from my sides upon the ground. बाद में मुझे बताया गया था कि इनमें से कुछ मेरी टांग पर से मेरे पहलू में ज़मीन पर छलांग लगाते वक्त गिरकर ज़ख्मी हो गए थे. I tried to free myself with a violent pull. मैंने एक गज़बनाक झटके से खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश की. As a result, I was able to free my hair on the left side. इसके नतीजे के तौर पर मैं अपने बाएं तरफ के बाल आज़ाद करवा सका. Seeing the inhabitants, I thought that I might face the greatest army they could bring against me. इन बाशिंदों को देखते हुए मैंने सोचा कि मेरा सामना एक अजीम फ़ौज से हो सकता है जो ये मेरे खिलाफ लेकर आएंगे. In the meanwhile, they prepared a stage about a foot and a half from the ground. इसी दौरान उन्होंने ज़मीन से कोई 1.5 फुट की ऊंचाई पर एक स्टेज बनाई. Then came a gentleman who seemed to be an officer of a high rank. फिर एक मुअज़्ज़ज़ आदमी आया जो किसी आला दर्जे का अफसर लगता था. He made a long speech. उसने एक लंबी तकरीर की. Although I did not understand a word yet, I could see that he was a good orator. बावजूद इसके कि मैंने इसका एक भी लफ्ज़ समझ ना सका, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि वो एक अच्छा मुकर्रर है. There were expressions of threatening, piety, kindness and promises. वहाँ धमकी, तरस खाने, मेहरबानी और आइंदा के अच्छे वादे वाले तासरात थे.
I answered in a few words. میں نے چند الفاظ میں جواب دیا. I tried to assure the gentleman of my safe conduct and behavior. میں نے اس معزز آدمی کو اپنے اچھے رویے اور چال چلن کا یقین دلانے کی کوشش کی. I used hands and facial expressions to convey this to the gentleman. میں نے اس بات کو اس معزز آدمی تک پہنچانے کے لیے چہرے کے تاثرات اور ہاتھوں کا استعمال کیا. Since I was hungry, I asked him for food. جیسا کہ میں بھوکا تھا میں نے اس سے کھانا مانگا. I conveyed my message by putting my finger frequently to my mouth. میں نے بار بار اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال کر یہ پیغام اس تک پہنچایا. He understood me very well. وہ میری بات اچھی طرح سمجھ گیا. After that, hundreds of the inhabitants mounted on me with the help of ladders and walked towards my mouth. اس کے بعد سینکڑوں باشندے سیڑھیوں کی مدد سے میرے اوپر چڑھ گئے اور میرے منہ کی طرف چلنے لگے. They were carrying baskets full of meat. وہ گوشت سے بھری ہوئی ٹوکریاں اٹھائے ہوئے تھے. I observed that they supplied meat of several animals. میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سے مختلف جانوروں کا گوشت مجھے دیا. There were shoulders, legs and loins. اس میں کاندھے، ٹانگیں اور رانوں کا گوشت شامل تھا. They supplied me food as fast as they could. ان سے جتنی جلدی ہو سکتا تھا انہوں نے مجھے خوراک دی. They were astonished to see my appetite. وہ میری بھوک دیکھ کر حیران ہو گئے. Then I made another sign that I wanted to drink. پھر میں نے ایک اور اشارہ کیا کہ میں پینا چاہتا ہوں. Knowing my size and appetite, they slung up one of their largest bucket full of water. میری جسامت اور بھوک کو دیکھ کر انہوں نے اپنی سب سے بڑی پانی سے بھری بالٹی لٹکائی. I drank a number of them. میں وہ کافی ساری پی گیا. Soon after relishing the food, I again went to a deep sleep. جلد ہی کھانے کا مزہ لینے کے بعد میں گہری نیند سو گیا. They had mixed some tranquilizer. As a result, I went to a deep sleep. انہوں نے کوئی مسکن دوا ملائی تھی جس کے نتیجے میں مجھے گہری نیند آ گئی تھی.